इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विरोक्तवान् यत् तदीयं प्रशासनम् आतङ्कवादम् अशान्तिप्रसारकान् मावोवादी तत्त्वान् च विरुध्य शून्यसहिष्णुतायाः नीतौ कार्यम् आचरति। प्रधानमन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट इत्येतस्य उद्घाटनं कृतम्। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण उक्तं यत् भारतेन गोलिकाप्रहारसैन्यकार्याचरणयोः स्थगनसहमतेः माध्यमेन पाकिस्तानेन सह संघर्षः सम्प्रति समासाधितः। ऋतुविभागेन श्वः पर्यन्तं कोङ्कणे गोवायां च अतिवृष्टेः अनुमानं व्यक्तम्। अपि च बैडमिण्टन क्रीडायां मलेशिया मास्टर्स इति स्पर्धायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः पुरुषैकलवर्गे उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् तदीयं प्रशासनम् आतङ्कवादम् अशान्तिप्रसारकान् मावोवादी तत्त्वान् च विरुध्य शून्यसहिष्णुतायाः नीतौ कार्यम् आचरति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट इत्येतस्य उद्घाटनावसरे श्रीमोदिना उक्तं यत् विकसितभारतस्य निर्माणाय देशस्य पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः नितराम् आवश्यकः। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एकस्मिन् समये पूर्वोत्तरं केवलं सीमान्तक्षेत्रमिति उच्यते स्म। प्रधानमन्त्रिणा स्वीकृतं यत् पूर्वोत्तरक्षेत्रेण अतीतकाले बहूनि समाह्वानानि सम्मुखीकृतानि, परम् इदानीं तच्छेत्रम् अवसराणां भूमिरूपेण उदीयते। श्रीमोदिना शिखर सम्मेलने उद्योगजगतः प्रमुखजनानाम् उपस्थितिः श्लाघिता। प्रोक्तं च यत् क्षेत्रे उपलब्धावसराणि आदाय उत्साहस्य परिवेशो वर्तते। अस्मिन् अवसरे पूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया अवोचत् यत् केन्द्रप्रशासनेन पूर्वोत्तरक्षेत्रे आधारभूतसंरचनां सम्पर्कं च समेधितुं बहुकार्यं कृतम्। ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन का जो विजन है, उसके आधार पर इस क्षेत्र को एक स्ट्रेटेजिक हब बनाया है, कनेक्टिविटी का, ग्लोबल ट्रेड का और ग्रोथ का। पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 2,000 किलोमीटर की रेल लाइन बनी, सबसे लंबा रोड का पुल भूपेन हजारिका पुल 9.5 किलोमीटर का बना है। रेल और रोड दोनों का पुल बोगीबिल ब्रिज 5.5 किलोमीटर का बना है। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण उक्तं यत् भारतेन गोलिकाप्रहारसैन्यकार्याचरणयोः स्थगनसहमतेः माध्यमेन पाकिस्तानेन सह संघर्षः सम्प्रति समासाधितः। डेनमार्कस्य वार्ताभिकरणेन सह साक्षात्कारे डॉ जयशंकरेण उक्तं यत् पाकिस्तानं विरुध्य भारतस्य कठोरकार्याचरणेन एतत् सम्भवम् अभूत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः जर्मनस्य चांसलरेण फेडरिक मर्जेण सह बर्लिने अमिलत्। जयशंकरः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शुभकामनाः मर्जाय प्रायच्छत्। गृहमन्त्री अमितशाह प्रावोचत् यत् सिन्दूराभियानं पहलगाम आक्रमणस्य उत्तरमस्ति। अपि च अद्य विश्वं भारतीयसशस्त्रबलानां वीरतायाः प्रशंसा कुर्वदस्ति। श्री शाह प्रोक्तवान् यत् प्रशासनस्य सुदृढतया, राजनीतिकिच्छया, शक्त्या, गुप्तसमवायानां प्रामाणिकसूचनाभिः, सशस्त्रबलानां घातकैः क्रियान्वयनैः च सम्भवम् अभवत् इदं कार्यम्। ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को
वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। अद्य नवदिल्ल्यां सीमसुरक्षाबलस्य अलङ्करण समारोहं सम्बोधयन् श्री शाह प्रोक्तवान् यत् बीएसएफ इति सीमसुरक्षाबलेन सशस्त्रबलेन च पाकिस्तानं प्रति भारतस्य उत्तरपूर्वकं क्रियान्वयनं महत्या वीरतायाः रक्षायाश्च सच्छक्तेः प्रदर्शनमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जनतादल यूनाइटेड इति दलस्य संजय झा सांसदस्य नेतृत्वे जापानं गच्छत् सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य जापाने टोक्यो नगरे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीति दलस्य आतंकरोधी समितेः कार्यवाहक अध्यक्षेण पूर्वन्यायमन्त्रिणा यासुहिरो हनासी इत्यनेन सह मेलनं व्यदधात्। प्रतिनिधिमण्डलम् आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां विरोधे भारतस्य दृढं पक्षम् अप्रकाशयत्। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. It's enough is enough. You cannot talk anymore now. If anything happens to our citizens, we will hit back. We will retaliate. अपरत्र डीएमके सांसदस्य कनिमोई करुणानिधेः नेतृत्वे एकम् अन्यत् सर्वदलीयं प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य मॉस्कोनगरं सम्प्राप्तवान्। रूसे भारतीयः राजदूतः विनयकुमारः प्रतिनिधिमण्डलस्य आधिकारिक गतिविधीनां प्रारम्भात् पूर्वं भारतरूसयोः सम्बन्धानां विभिन्नैः पक्षैः अवागमयत्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् राष्ट्रम् उन्नतप्रौद्योगिक्या विकासेन च साकं वन्दे भारत नमो भारत प्रभृति नूतन रेलयानानि चालयितुम् आत्मनिर्भरं जायते। मुंगेरस्य जमालपुरे एकं समारोहं सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशेन विगतेषु 10 वर्षेषु 50,000 किलोमीटर यावत् रेलवे सञ्जालस्य विद्युतीकरणं कृतम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य सन्दर्भे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् उपरि कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गान्धिनः टीकायाः आलोचना कृता। दलेन प्रधानमन्त्रिणः विरोधे प्रयुक्तानां गान्धिनः भाषां प्रति आपत्तिः कृता। अद्य नवदिल्ल्यां दलस्य प्रवक्तुः गौरव भाटिया इत्यस्य आरोपः आसीत् यत् भारतस्य आतंकरोधिनः सफलाभियानस्योपरि कांग्रेस नेत्रा एतादृशे क्षणे तथा टीका कृता यदा 40,100 कोटिजनाः श्रीमोदिनः नेतृत्वे स्थिताः सन्ति, विश्वं प्रशंसां च करोति। ऋतुविज्ञानविभागेन श्वः पर्यन्तं कोङ्कणे गोवायां च अतिवृष्टेः अनुमानं व्यक्तम्। ऋतुविभागः दक्षिणकोङ्कण कर्णाटकयोः तटीयक्षेत्रेषु मध्यमहाराष्ट्रे गोवायां च तीव्रवृष्टेः रक्तनारङ्गी च सञ्चेतने प्रसारिते जाते। आकाशवाणी वार्तया विशेषवार्तायां विभागस्य वैज्ञानिकः आर्के जेनामणिः प्रोक्तवान् यत् पूर्वमध्य अरबसागरस्य ऊर्ध्वे न्यून आपीडनस्य क्षेत्रं गोवातटस्य समीपे अस्ति, अपि च गहन आपीडने परिवर्तनस्य अनुमानम् अस्ति। अमेरिका ईरानयोः मध्ये अद्य इटल्याः राजधान्यां रोमनगर्यां पञ्चमक्रमस्य अप्रत्यक्षा वार्ता प्रारब्धा। उभयोः देशयोः मध्ये इदानीं यावत् चतुर्थवारं वार्ता सञ्जाता। एतासु तिस्रः वार्ता ओमानस्य राजधान्यां मस्कटे सञ्जाता। एका च रोमे अभवत्। एषा वार्ता परमाणुकार्यक्रमस्य विषयकं गतिरोधम् अमरीकीयं प्रतिबन्धं च अपाकर्तुं वर्तते। एषा वार्ता ओमानेन कार्यते। बैडमिण्टन् क्रीडायां मलेशिया मास्टर्स इति स्पर्धायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः पुरुषैकलवर्गे उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः। अमुना रोमाञ्चके प्रागुपान्त्यचक्रे फ्रांस देशस्य टोमा जूनियर पोपोव इत्यसौ पराजितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धामालिकायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलेन सह स्पर्धिष्यति। इति वार्ताः।